Greetings to all the aspirants present out there. This is Chandigarh Civil Services. Aspirants, we have already started one series, that is of the Himachal current affair, in which we had already covered your Jan to December 2022 current affairs plus 2023 current affair also. So continue that particular series. In this particular session, we will be having a discussion of your April 2023 current affairs. Specifically talking about, we will be having a discussion of your Himachal Pradesh specific current affair. So first thing जो आपकी न्यूज में थी, that is very important, that is Nurpur gets World Bank road safety project. As we know that road mishappening is a day-to-day activity. So yes, one very important project which is funded by World Bank is about to happen at a particular place, that is Nurpur. So let's talk about it. In order to check the road mishap and the various road crash fatalities and injuries through improved, there is a road safety management and there will be an institution reform specifically in the Nurpur police district. So yes, आपका जो World Bank है, that will fund this ambitious road safety enforcement project, that is your RSEP, specifically in the Nurpur police district. So yes, इस project से क्या होगा, it will directly focus on your strengthening and streamlining the management capabilities for the road safety in this police district. So with the very interstate border activities also. So beside this, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा आपकी जो इमरजेंसी मेडिकल और जो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होती हैं फॉर द पोस्ट क्रैश केयर ऑल्सो. अलॉन्ग विद दिस, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने सोर्सेज ने रिवील किया है कि अराउंड 25 लोकेशंस दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द डिस्ट्रिक्ट एंड वेयर एविडेंस बेस, दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, digital surveillance cameras, that is your AIDSC, that will also be based on that particular location. And yes, it will help in making your road safety violation most robust. Means ये जो आपके cameras हैं उनको install किया जाएगा. And yes, with a very centralized traffic enforcement control room, and ये सारा जितना भी control management होगा, that will be done at your Shimla. So this is very important. And yes, talking about this particular project, what are the important about this and unique about this project, तो क्या है कि जो जितने भी आपके black spots हैं roads में and the shortcoming in the road engineering, वो सारा ही यहाँ पे workout किया जाएगा. Along with this, एक बहुत ही dedicated special project will be provided for the mobile police mobility and yes, procurement of your interceptor patrolling vehicles. So this is very important. And yes, जो road engineering है, that will also be improved with the very roadside crash barrier will be also there. And yes, जो highway patrol vehicles हैं, that will be equipped with the CCTV cameras and your rescue equipment and medical first aid facilities. So this is about the unique about this project. So very important कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके साथ लिंक्ड है, दैट इज योर वर्ल्ड बैंक, एंड विच पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज देयर, दैट इज योर रोड सेफ्टी एनफोर्समेंट प्रोजेक्ट, और कहाँ पे है, दैट इज एट द नूरपुर पुलिस स्टेशन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज योर डॉपलर सिस्टम एट द भूंदर टू हेल्प द लैंडिंग इन बैड वेदर. वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपका डॉपलर very high frequency omni range, that is your DBOR, and DME, that is your distance measuring instrument system जो है, that will be set up by your authority, that is your airport authority of India. At the top of कहाँ पे ये setup किया जाएगा, that at the थाची हिल जो कि आपकी 60 किलोमीटर है फ्रॉम भूंतर एयरपोर्ट, विच इज नियर द कुल्लू मनाली आपका जो बॉर्डर है. सो दैट हैज बीन कमीशन. एंड येस, यहाँ पे क्या है, इससे क्या होगा कि जो एयरक्राफ्ट होंगे दैट विल बी एबल टू लैंड इवन इन अ वेरी बैड वेदर एट द भूंतर एयरपोर्ट ऑल्सो. एंड येस, जो आपकी ग्लोबल एविएशन वॉचडॉग है, दैट इज योर ICAO, दैट इज योर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, that also consider कि ये जो DBOR which is coupled with your DME standard navigation, that will also help or aids for the approaching aircraft. So this is very important कि जो landing है वो bad weather में भी क्या है possible हो पाएगी. Along with this, with the help of DBOR and DME,
जो एयरक्राफ्ट हैं दैट कैन एक्यूरेटली वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे इट्स डिस्टेंस, वाइल जब एयर में भी है तो उसका सरफेस से कितना डिस्टेंस है, दैट विल ऑल्सो बी एबल टू प्रिडिक्ट वेरी एक्यूरेटली. सो इंपॉर्टेंट कि जो डॉपलर आपका DBOR है प्लस DNE की तरफ से, उससे क्या होगा कि जो आपका लैंडिंग है वो भुंतर एयरपोर्ट में बहुत ईजिली जो है वो हो पाएगी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग विच वॉज इन द न्यूज, दैट इज बटरफ्लाई म्यूजियम ड्रॉज टूरिस्ट रिसर्चर्स. दैट इज आपकी जो एक फॉरेस्ट की टीम है ऑफ द फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है in order to search and conserve your butterfly species, especially जो आपकी भतियात एरिया में मिलता है. and this particular area जो है that falls in the Dalhousie forest division of Chamba district. and yes, why this particular area or the is important, क्योंकि यहाँ पे क्या है around 120 species of butterflies जो है आपकी वो भतियात फॉरेस्ट रेंज में मिलती है. और यस, इसमें इंक्लूडेड आपकी डैनिड एग फ्लाई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कौन से हैं, दिस इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. सो दैट मीन्स अगर ये शेड्यूल 1 में है सो दैट मीन्स इट रिक्वायर अटमोस्ट प्रोटेक्शन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यस, यहाँ पे क्या होगा, जो अभी जो रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से जो फोटोग्राफ्स ऑफ अराउंड 57 ऑफ दीज स्पीशीज जो है दैट हैज बीन डिस्प्लेड इन द रिसेंटली सेटअप फॉरेस्ट म्यूजियम एट द सिहुंता इन द भतियात. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे क्या है, एक म्यूजियम भी बनाया गया है. इंपॉर्टेंस क्या है इस म्यूजियम की, नॉट ओनली ये आपका कंजर्व करेगा बटरफ्लाइज को, बट येस इट विल बी अ वेरी पॉपुलर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमंग द रिसर्चर्स and also for the tourist also. So that means ये जो main purpose, लेकिन हम अगर इसका main purpose बोलें कि why this documentation of the butterflies, it is just to demonstrate the quality of the environment and yes highlight for the forest conservation. क्योंकि हमें पता है जो आपकी butterflies होती हैं that plays a very important part of your ecosystem because they help in the pollination and yes they are the most important part of your biodiversity also. So ecological balance maintain करने के लिए भी क्या है, butterfly जो है बहुत ज़्यादा important role play करते हैं. So this is about कि आपका जो museum है that will be set up at the, कहाँ पे आपका setup होगा, that is सियुंता in the भतियात area जो कहाँ पे located है, चंबा में. So this is all about your butterflies. Next thing, that is your Nalwari fair begins at Bilaspur. Important, जो आपकी मंडी डिवीजन कमीशन है उन्होंने इनॉग्रेट किया आपका 134th edition of the, this is a state level fair at the बिलासपुर recently. and yes, जब हम इसकी बात करते हैं फेयर की तो ऐसा माना जाता है कि अनंत चंद जो बिलासपुर के थे उन्होंने ये फेयर जो था वो स्टार्ट किया था. एंड येस, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फेयर, तो मोस्टली ये ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है ऑन द ऑनसेट ऑफ योर हार्वेस्टिंग एंड कल्टिवेशन सीजन. एंड येस, इस पर्टिकुलर फेयर, वाई दिस पर्टिकुलर फेयर में ऐसा क्या खास बात है, तो येस देयर इज अ buy or exchange of the pair of the oxen for the next crop. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस फेयर में बहुत ही बेस्ट पेयर ऑफ द ऑक्सन को देखा जाता है. एंड देन दे आर, yes they are brought from the nearby states also like your पंजाब एंड हरियाणा और उसकी एक्सचेंज होती है. तो इंपॉर्टेंट कि नलवारी फेयर कहाँ पे स्टार्ट हुआ है आपका, बिलासपुर में. नेक्स्ट थिंग विच वॉज इन द न्यूज, दैट इज होली सेलिब्रेटेड एट द हिस्टोरिकल नूरपुर टेम्पल. सो येस, आपकी जो होली है वो सेलिब्रेट किया गया है इन अ वेरी हिस्टोरिकल योर ब्रिजराज स्वामी टेम्पल ऑफ द लॉर्ड कृष्णा इन नूरपुर. सो येस, ये आपका जो मार्च 7 और 8 ऑन द टेम्पल प्रमाइसिस में क्या है, ये वाला जो है टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया है. 2 days का था. फर्स्ट डेज में दे प्लेड विद द फ्लावर्स, whereas on the second day they played it with the gulal also. So thousands of devotees ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है. and as we all know that अगर नूरपुर में हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट, नूरपुर की जब हम बात करते हैं तो येस इट इज़ फॉर्मली इसको धमेरी भी बोलते थे एंशियंट टाइम में. एंड येस, इट इज़ लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. एंड येस, ये जो ब्यूटिफुल फोर्ट है धमेरी का, दैट वॉज बिल्ट बाय राजा वासुदेव जो आपका रूलर थे पठानकोट के ऑफ द पठानिया क्लैन इन द 16th century. एंड येस, यहाँ पे जो हिस्टोरिकल फोर्ट है यहाँ पे आपका बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू देखने को मिलता है ऑफ द जबरकुट
जो कि आपकी ट्रिब्यूटरी है ऑफ द रिवलेट कॉल्ड एज अ चक्की. सो दैट मीन्स दिस इज इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे आपका ये होली की सेलिब्रेशन हो रही है, आपका ब्रिजराज स्वामी टेम्पल. एंड येस, ये जो नूरपुर है दिस इज कॉल्ड धमेरी. और येस, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट. दिस इज अबाउट this holy celebration. Next thing, that is your IIT Mandi celebrates the 14th foundation day. So yes, जो आपका Indian Institute of the Management which is Mandi, इसने अपना 14th foundation day जो है वो celebrate किया. और जो आपके प्रोफेसर TG सीतारमन है, फाइन, दैट इज द चेयरमैन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, वो चीफ गेस्ट थे. एंड येस, यहाँ पे जब हम 14th इसकी फाउंडेशन डे की सेलिब्रेशन की बात करते हैं तो येस, ये जो फाउंडेशन स्टोन था आपका IIT मंडी का, दैट वाज लेड ऑन योर 24th February 2009. सो IIT मंडी जो है ये रजिस्टर्ड है आपकी एज अ सोसाइटी इन द उत्तराखंड ऑन 20th of June 2009. सो यहाँ पे जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो 27 जुलाई 2009 से स्टार्ट हुई थी. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फाउंडेशन स्टोन जो था वो कब लेट किया था, दैट इज ऑन द 24th February 2009. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. और अभी जो है हमने इसका 14th फाउंडेशन डे की जो है वो सेलिब्रेशन की है. सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर न्यूज. नेक्स्ट, द लास्ट न्यूज इज your Prabodh Trivedi. He's the new director of the CSIR IHBT. So again, this is the factual information. That is your जो Prabodh Kumar Trivedi है, he took as a charge as a director of the CSIR Institute of Himalayan Bioresource Technology that is located at the Palanpur. So yes, at present ये जो आपके त्रिवेदी हैं, he is the director of the CSIR, that is Central Institute of Medical and Aromatic Plants, that is your CIMAP Lucknow. So अभी इन्होंने क्या है, he is appointed as a new director of the CSIR IHBT which is located at Palanpur. And yes, आपके जो संजय कुमार थे previous, he superannuated on the February 28th. So yes, जो आपके त्रिवेदी हैं, he selected as a new director of the CSIR IHBT. So aspirant, this is about your April current affair related to your Himachal Pradesh. So we have already covered your 2022 whole current affairs related to your Himachal Pradesh. As we know that your Himachal Pradesh preliminary examination is approaching. So Himachal Pradesh specific current affairs, that itself plays a very pivotal role when it comes to your preliminary examination. So you can see in the description box also regarding the 2022 current affairs plus your 2023 current affairs also. So that's all for today's session. So stay tuned and connected. Thank you.